topics are first, definition of alcohol, classification of alcohol, then after IUPAC nomenclature of alcohol, then after preparation of alcohol. This preparation of alcohol is completely over all the methods. These are the preparation of alcohol. Then after we had discussed in the last class physical properties of alcohol, that is boiling point and solubility. And now we are in the topic that is chemical properties of alcohol. In chemical properties, I informed you that alcohol is showing two types of chemical property, that is acidic nature by cleavage of OH bond and basic nature by cleavage of CO bond. In acidic nature, all the reactions are over. In basic nature, first one, that is acid reaction, that you will you have means we had discussed in previous chapter. You will write from there. So this part is over. And dehydration of alcohol. In dehydration of alcohol, that day in dehydration of alcohol, that day we had discussed the normal information ki what is dehydration and what is form after dehydration and what are the requirements for first degree, second degree and third degree alcohol, which one undergo dehydration more. रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है. Hello, hello, is there any problem? Is there any problem? Piyush, Amit, Astha, anyone please? No, sir. Okay, thank you. So this part is over. Hello, hello. Sir, I am not to mark my attendance. Who, Amit, you are there? Yes, sir. Then please send attendance in WhatsApp. Okay, Amit. Voice and screen are clear, Amit, or not? Sir, Amit, voice and screen both are clear. yes, sir. Okay, please send your attendance in WhatsApp. Just write today's date, and I will write here. Or Piyush, please Okay. you write here. Piyush, please you write here in chat option. Amit 13th August. Just Amit 13th August. Okay, so now that day I informed you कि we need to discuss the mechanism. Now this is the second mechanism of this chapter. Remember, what will be the heading? Heading will be there. Mechanism of dehydration of ethene. Mechanism of dehydration of ethene. First ethene करें, ethanol. Dehydration of ethanol. First name, first heading will be this. Second, you can write mechanism of formation of ethene from ethanol. Mechanism of formation of ethene from ethanol means ethanol से ethene बनाना. प्रिपरेशन मेथड में क्या था? मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन, और यहाँ पर है इथीन फ्रॉम इथेनॉल. सो यू विल राइट द टू नेम. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, वन फर्स्ट नेम, और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल. इथेनॉल से इथीन बनाना. As like the previous one, it completes in 3 steps. That is protonation. Second, that is formation of carbocation. And third, that is deprotonation, elimination of proton. So you can write both the name. Formation of protonated alcohol
or protonation. As in previous I informed you, you can write the two heading. The process is called protonation or formation of protonated alcohol. Second, formation of carbocation. And third, that is formation of ethene by elimination of proton, or you can say deprotonation. So there are three steps in this mechanism. Three steps mechanism will come for 2 marks. 2 marks के लिए आता है. First of all, you will write the name of steps: protonation or formation of protonated alcohol, second formation of carbocation, and third deprotonation or elimination of proton. Now in first step में again you will write some extra equation here in first step, that is ये यहाँ पे 3 स्टेप दिख रहा है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड. बट इन फर्स्ट स्टेप यू विल नॉट राइट ओनली दिस वन. आप केवल ये नहीं लिखोगे, यू विल राइट H2SO4. पहले एक इक्वेशन, इसके पहले यू विल राइट one equation given here, but in your NCERT it is given, that is H2SO4. First of all, H2SO4 will be broken down to give the H plus and HSO4 minus. HSO4 minus. So first you will write this equation, and from here the H plus comes here. यहाँ से H plus यहाँ आया है. Now in first step, second equation will be this, कि in this protonation means proton is attack on ethanol. प्रोटॉन इथेनॉल पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है. प्रोटॉन इज अटैकिंग ऑन इथेनॉल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल. केवल क्या करना है? ऑक्सीजन के ऊपर H प्लस को अटैच कर देना है, एंड H प्लस मीन्स प्लस चार्ज ऑफ H कम्स एट ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल. व्हेन प्रोटॉन कम्स इन अटैच in alcohol, then that alcohol is called protonated alcohol. So once again, your first heading will be there is step first, protonation or formation of protonated alcohol. In this you will write two equation. First, H2SO4 will be ionized to give the H plus, and second, H plus will be attack on ethanol to form protonated ethanol. So first step is over. कुछ statement नहीं लिखना है, केवल equation लिखना है. Second step, what will be happen? Second step heading will be there, that is formation of carbocation. So second heading you will write formation of carbocation, and in this what will be happen? This water molecule will be remove out. ये water molecule क्या होगा? निकलेगा, and plus charge comes at the carbon. Plus charge carbon पे आ जाएगा. So it form carbocation and release water. That's why its name is dehydration. Process name is dehydration because water is removed out and it form carbocation. Second step over, only this one equation. Third step you will write formation of ethene by elimination of proton. Formation of ethene by elimination of proton, or you will write deprotonation. In this you will write the two equation. One equation is given here. In this deprotonation, you can see here the bond is going to be break down. This H will be removed out with this plus charge. So it form H plus, means H plus is going to be removed and double bond is going to be formed. So this single bonded compound, by removal of H plus, यहाँ से H plus निकल जाएगा. So carbon get the negative charge, and this negative carbon and positive carbon are formed double bond. So it convert into alkene by removal of H plus. In this step, H plus is going to be removed. That's why it is deprotonation. Elimination of proton means deprotonation. And in first step,
proton is going to be attached, that's why its name is protonation. So protonation means H plus will be attached and deprotonation means H plus will be removed. So this is deprotonation. In this what will be happen, this H plus, so last equation in the third step you will write that H plus which comes from here, that will react with this HSO4 minus which form in the first step HSO4 minus to give H2SO4 back, because H2SO4 is catalyst, so we need to uh, find the catalyst, we need to get the catalyst back at the last. So total 3 equations are given here, but overall you will write the 5 equation. In first step the 2 equation, first equation, that is ionization of H2SO4, then attack of proton. Second step only 1 equation. Third step there is 2 equation, removal of proton, and proton comes and attach with HSO4 minus to give the H2SO4. So finally it form the alkene, So mechanism is saying कि write the mechanism of dehydration of ethanol, or write the mechanism of conversion of preparation of ethene from ethanol. So you will write it completes in 3 steps. First, protonation or formation of protonated alcohol. Second, formation of carbocation. Third, elimination of proton or deprotonation. First heading, protonation or protonation or formation of protonated alcohol. Then you will write first equation and second equation. Step first over. Second step, that is the formation of carbocation, this step. And third, that is deprotonation or elimination of proton. So in this 2 equation is there, first proton will be removed, second proton will be from the H2SO4 back. So this is the process of dehydration, that is mechanism. Now next, as I informed you कि in this by mistake I had written reduction, so you will write here oxidation. So we are going to discuss the last property of alcohol, that is oxidation. Oxidation of alcohol. So oxidation of alcohol is done by 2 way, either by use of oxidizing agent. This will be not reducing, that day I informed you कि अपने टेबल में सही कर लीजिएगा, दिस विल बी नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड दिस विल बी नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. And second is by use of copper, so means alcohols are undergo oxidation. Now we are going to discuss the oxidation of alcohol. See, oxidation of alcohol. Alcohols are oxidized in 2 ways, as you have seen, by use of oxidizing agent or by use of copper. Now the question is there, what will be the oxidizing agent? Oxidizing agent क्या क्या हो सकता है? So remember, oxidizing agent for alcohol is 2. अल्कोहल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 टाइप का है. वन इज SOA. SOA means strong oxidizing agent, and second is MOA, moderate oxidizing agent. So one is strong oxidizing agent, one is moderate oxidizing agent. So 2 types of oxidizing agent can be oxidize the alcohol. One is a strong oxidizing agent and second is a moderate oxidizing agent. What are strong oxidizing agent? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होगा? सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी एसिडिक K2Cr2, K2Cr2O7. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7. Not only K2Cr2O7, acidic K2Cr2O7 means in the solution of K2Cr2O7 small amount of acid will be
देयर। और क्या होगा, इसके जगह पे और क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे वी कैन यूज एसिडिक और एल्केलाइन, एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4, एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4, रिमेंबर दीज, acidic K2Cr2O7 and acidic or alkaline KMnO4 are strong oxidizing agent, ये दोनों strong oxidizing agent होते हैं। एंड मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब बात आई मॉडरेट में, टू आर देयर, दो हैं, ठीक है। वन इज दैट इज CO3 chromium and is second is PCC, रिमेंबर। सो फिर से चेक करिए, वन बाय वन चीज़ों को कैप्चर करिए। फर्स्ट दैट इज what we are going to discuss, oxidation of alcohol. Then something comes in mind, how the alcohol will be oxidized. So alcohol will oxidize by two way, either by use of oxidizing agent or by use of copper, दो आपके में दिया हुआ है। now if by use of oxidizing agent, then what will be act as oxidizing agent, how many types of oxidizing agents are there? Then for alcohol there are two types of oxidizing agent, one is a strong oxidizing agent, one is a strong oxidizing agent, another is a moderate, MOA, moderate oxidizing agent. Now what are the chemicals which are act as strong oxidizing agent? Then that will be acidic, जहाँ दिखे acidic K2Cr2O7 strong oxidizing agent, और एसिडिक और एल्केलाइन, एसिडिक हो या एल्केलाइन हो, KMnO4, that is strong oxidizing agent. And for moderate what will be here, for alcohol, alcohol के लिए what will be moderate oxidizing agent, then that will be CrO3, chromium oxide, or PCC, PCC, PCC. Now see, this one is with a strong oxidizing agent, and these are with moderate oxidizing agent. Now another information, strong oxidizing agent always form carboxylic acid, strong oxidizing agent क्या बनाता है, carboxylic acid, and moderate oxidizing agent form aldehyde or ketone. Strong oxidizing agent convert alcohol into carboxylic acid, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन. So now how you will write, so your heading will be oxidation, oxidation, and in this you will write alcohols are oxidized in following two way, ठीक है, फर्स्ट वन by use of oxidizing agent, second by copper, as two are given in your table, that chart, by use of oxidizing agent by copper. Now first heading will be there, by use of oxidizing agent, then you will write alcohols are oxidized by following two types of oxidizing agent, first one is strong oxidizing agent, second one moderate oxidizing agent. Now first subheading will be there, strong oxidizing agent or by strong oxidizing agent. You will write acidic K2Cr2O7 or acidic or alkaline KMnO4 are act as strong oxidizing agent for alcohols. When alcohols undergo oxidation by use of these two oxidizing agent, acidic K2Cr2O7 or acidic or alkaline KMnO4, then it form carboxylic acid. तब ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एंड यू विल राइट जस्ट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लिख देंगे, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ
Next heading, subheading, by moderate oxidizing agent. In moderate oxidizing agent you will write alcohols are oxidized by moderate oxidizing agent also, and the moderate oxidizing agent for alcohols are CrO3 or PCC. CrO3 or PCC. Then after you will write in the next line, paragraph change करेंगे, next line, when first degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent. जब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म एल्डिहाइड, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल. बट व्हेन सेकेंड डिग्री अल्कोहल, जब सेकेंड डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता है विथ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, then it form ketone. So remember, first degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent, then it form aldehyde, and second degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent, then it form ketone. ठीक है. तब आप फिर आफ्टर दैट जब आप फर्स्ट वाला लिखेंगे व्हेन फर्स्ट डिग्री अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट फॉर्म एल्डिहाइड, यू विल राइट दीज टू इक्वेशन. आप ये दो इक्वेशन लिखेंगे. एंड व्हेन second degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent to form ketone, then you will write this equation. And then after note, after this you will write the note. In note you will write कि strong oxidizing agent always form carboxylic acid, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो चाहे सेकेंड डिग्री हो, नो मैटर. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट नोट में फर्स्ट पॉइंट. second point is very important. Now see, when any alcohol is allyl alcohol, see, allyl alcohol, allyl word बताया गया था. when OH is attached at sp3 carbon and that sp3 carbon attached at sp2 carbon. When any alcohol is allyl alcohol or enol, allyl alcohol or enol. Allyl alcohol means having double bond and OH, or enol means also having double bond and OH. When any alcohol is allyl alcohol or enol, then that will be oxidized by PCC only. तब वो किससे ऑक्सीडाइज होता है? PCC से. But when any alcohol is alkyl alcohol, then that will be oxidized by CrO3. PCC और CrO3 दो बताया गया है, but PCC will be only and only used for allyl alcohol or enol, or one more word will be there, unsaturated alcohol. Unsaturated alcohol means double bond and alcohol. So in note what you will write? You will write in note is first number is strong oxidizing agent always produce carboxylic acid or always form carboxylic acid. Second you will write in moderate oxidizing agent, if any alcohol or enol or unsaturated alcohol, then PCC is used as oxidizing agent. तब PCC oxidizing agent का वर्क करेगा. And third number, if alcohol is saturated alcohol or alkyl alcohol, then CrO3 will be act as moderate oxidizing agent. I am saying this because this was the question in 2 years back NEET examination, and I think previous year it was in JEE mains examination. कि which oxidizing agent will be used for oxidation of this alcohol. उस एल्कोहल में ये वाला एल्कोहल लिखा था, मतलब इनॉल वाला. एंड ऑप्शंस आर देयर. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मींस एसिडिक K2Cr2O7, CrO3, PCC, and none of the above.
सो वहाँ पे आंसर क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्डेड एल्कोहल आएगा मीन्स इनॉल अनसैचुरेटेड एल्कोहल, तो पीसीसी। एंड इफ सिंगल बॉन्डेड एल्कोहल इज देयर सैचुरेटेड एल्कोहल देन CrO3। डबल बॉन्ड वाले को CrO3 नहीं करेगा और सिंगल बॉन्ड वाले को PCC नहीं जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इन नोट यू विल राइट द फुल फॉर्म ऑफ PCC। ये भी पूछता है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या है? सो फुल फॉर्म ऑफ PCC इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, इन ब्रैकेट में आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ जहाँ पे ये इक्वेशन होगा। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सम अदर्स आर प्रोनाउंस इट pyridinium क्लोरोक्रोमेट। सो पीसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और pyridinium क्लोरोक्रोमेट। हर तरह से जो पेपर आता है उसमें ये फुल फॉर्म भी पूछता है। सो नाउ आफ्टर दिस द फर्स्ट ऑक्सीडेशन इज ओवर। नाउ your next heading will be there, oxidation of alcohol by use of copper। अब कॉपर का यूज करके, ठीक है। सो एल्कोहल्स, इसमें देखिए तीनों हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में केवल फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री था, but with copper first degree, second degree and third degree, all three are here. So any alcohol that is primary, secondary or tertiary, primary, secondary or tertiary, any alcohol, ठीक है, can react with copper at 573 Kelvin। 573 केल्विन पे कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है, सबके लिए सेम कंडीशन है। व्हेन फर्स्ट डिग्री अल्कोहल heated with copper at 573 Kelvin, then it form aldehyde by removal of hydrogen। क्या निकलता है? हाइड्रोजन, ठीक है। when second degree alcohol heated with copper at 573, then it form ketone again by removal of hydrogen। but when third degree alcohol, this is very important, third degree alcohol heated with copper at 573, then it form alkene। C double bond alkene by removal of water। इसमें क्या निकलता है? water। so C, we are discussing the topic oxidation। ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन आके ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। सो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो हियर ऑक्सीडेशन इज डन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट यू विल राइट, when any first degree or second degree alcohol is heated with copper, then it form aldehyde और कीटोन रिस्पेक्टिवली। या इससे बेटर ये है कि सिंगल सिंगल लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द हेडिंग ऑक्सीडेशन बाय कॉपर और बाय यूज ऑफ कॉपर, जो हेडिंग आपके चार्ट में, यू विल राइट दैट हेडिंग। देन यू विल राइट व्हेन फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, तीन कंडीशन में 3 नंबर में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हीटेड विथ कॉपर एट 573 केल्विन, देन इट फॉर्म एल्डिहाइड by removal of hydrogen and called dehydrogenation। Here will be O, dehydrogenation, and then first equation. Now second point, when second degree alcohol heated with copper at 573, then it formed ketone, by removal of hydrogen। This process is called डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, बोथ आर अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। बट थर्ड पॉइंट, व्हेन थर्ड डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल heated with copper at 573 Kelvin, then it form alkene
बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तब ये बनाता है एल्कीन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जो लास्ट में वाटर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सी इन द स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें देखिए, यहाँ पे ओ रहेगा। नाउ सी, when the primary secondary alcohol passed over copper at 573 then it undergo dehydrogenation। देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट और सेकंड में हाइड्रोजन निकल रहा है, सो अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन। But when third degree alcohol heated with copper at 573 then it undergo dehydration to form alkene। Remember this, ये थर्ड डिग्री वाला सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि what will be its product, ये नहीं लिखेगा और ये लिख कर कह देगा राइट द प्रोडक्ट। सो रिमेंबर, पहले आप क्या लिखेंगे, योर हेडिंग विल बी देयर ऑक्सीडेशन विथ कॉपर or reaction with copper. In this first number, when first degree alcohol heated with copper at 573 Kelvin, then it form aldehyde by removal of hydrogen called hydrogenation. Then equation. Second number, when second degree alcohol heated with copper at 573, then it form ketone by removal of hydrogen. Process is called dehydrogenation. ये भी dehydrogenation है. And third number, when tertiary alcohol or third degree alcohol heated with copper at 573 Kelvin, then it form alkene by removal of water. This is called dehydration. Dehydration. And this equation, आफ्टर दिस इन नोट यू विल राइट, इसके बाद आप नोट में लिखेंगे। मे बी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री एल्कोहल आर हीटेड विद कॉपर देन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, बट third degree alcohol heated with copper at 573 then undergo dehydration. Why? या first degree and second degree alcohol are heated with copper then it form aldehyde ketone, but third degree alcohol form alkene. Why? So you will say because third degree alcohol is more reactive. थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई इट अंडरगो इलिमिनेशन रिएक्शन ईजली। इसलिए ये इलिमिनेशन चैप्टर फर्स्ट, इलिमिनेशन चेटजेप रूल, तो वही वहाँ यहाँ पे टॉपिक है बीटा इलिमिनेशन। सो बिकॉज थर्ड डिग्री अल्कोहल इज वेरी रिएक्टिव एंड अंडरगो बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन इजिली। सो नोट में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज थर्ड डिग्री अल्कोहल इज वेरी रिएक्टिव एंड अंडरगो बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन इजिली, दैट्स वाई इट अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म एल्कीन। इसलिए डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाता है। एंड देन आफ्टर दिस part will be over. So someone's mic is on, please switch off your mic. Now see what we had discussed today. So today we had discussed the mechanism. हम कहाँ पर शुरू किए हैं फिर से चेक कर लीजिए। नाउ एल्कोहल इज ओवर, नाउ नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो वी विल डिस्कस द फिनॉल। एल्कोहल पार्ट खत्म हो गया। नाउ सी, we have started from here dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol में हमने mechanism पढ़ा, mechanism of dehydration of ethanol और formation of ethene from ethanol. Three steps were there: protonation or formation of protonated alcohol, second formation of carbocation, and third that is deprotonation or elimination of proton. So you will write in that way with the equation I informed you कि here the equation will be, यहाँ पे इक्वेशन आपके टोटल 5 होंगे, 3 गिवन है, टोटल 5 होंगे। फर्स्ट में एक इक्वेशन स्टार्ट में बढ़ जाएगा और थर्ड में एक इक्वेशन लास्ट में बढ़ जाएगा। And then after the next heading will be there oxidation of alcohol. In oxidation of alcohol, first of all statement कि alcohols are oxidized in two way. First one by use of oxidizing agent, second by use of copper. Now first heading by use of oxidizing agent. So alcohols are undergo oxidation by two types of oxidizing agent: strong oxidizing agent and moderate oxidizing agent.
Then heading, subheading will be there by strong oxidizing agent. In this, first of all, you will write ki what are the strong oxidizing agent, and then after you will write ki when any alcohol undergo oxidation with a strong oxidizing agent, then it form carboxylic acid, and this equation you will write there over. Now next, with moderate oxidizing agent, first of all you will inform ki what is moderate oxidizing agent, and then after you will write ki when first degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent, then it form aldehyde, and when second degree alcohol undergo oxidation with moderate oxidizing agent, then it ketone, तब ये बनाता है कीटोन. एंड फर्स्ट वाले में ये दोनों इक्वेशन, सेकंड वाले में ये. देन नोट, then in note you will write the 3 point. First, if allyl alcohol, unsaturated alcohol or enol is there, then PCC is act as a moderate oxidizing agent, and if saturated alcohol is there, then CrO3 is act as moderate oxidizing agent. And third, the full form of PCC is pyridinium chlorochromate. And then after, next one will be there, that is oxidation by copper or reaction with copper. In this you will write the first point, when first degree alcohol heated with copper at 573 Kelvin, then it form aldehyde by removal of hydrogen. This process is called dehydrogenation. Second, when second degree alcohol heated with copper at 573, then form ketone by removal of hydrogen. This process called dehydrogenation. Second equation will be there. Then third point, when third degree alcohol heated with copper at 573 Kelvin, then it form alkene by removal of water, not hydrogen. This process is called dehydration. Then equation, then after note, because third degree alcohol is more reactive, it undergo beta elimination reaction more easily than first and second degree alcohol. That's why it undergo dehydration to form alkene. इसलिए dehydration करके alkene बनाता है. And after that, these are the सब commercially used alcohol, methanol and ethanol. ठीक है, जैसे जैसे इसमें लिखा है you will write in your note, but these will not come in your board examination. अब ये board examination में नहीं है. ठीक है, सो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट यू विल प्रिपेयर दिस. जैसे यही क्वेश्चन पूछता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, दैट इज जाइमेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम इथेनॉल बनाने में यूज होता है? जाइमेज एंजाइम. या मिथेनॉल में सबसे जो अच्छा क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट इज वुड स्पिरिट. वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथेनॉल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट. ठीक है, इट वॉज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. क्यों? क्योंकि इसको वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता था प्रीवियस टाइम में, अब नहीं. नाउ इट इज प्रोड्यूस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. सो रिमेंबर दिस इक्वेशन. This may be help you in competitive examination, not in board examination. And after this, alcohol is over. Now tomorrow we will start the phenol.